Hey, hi guys. We'll start with material costing today. So we'll begin with illustration number one. I would request you all to pause this video for a second and go through the question once, and then we'll go ahead with the solution. I hope you guys have gone through the question. Now let us begin with the solution. So basically, here guys, we have the materials bought in by the customer or by the manufacturer. एंड उस पे लगा हुआ बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड उसका जहां से भी उसने खरीदा है या जहां से भी उसने केमिकल्स को लोड किया है फैक्ट्री तक लाने के लिए जितना उसको रेलवे फ्रीट लगा उसका अपने पास अमाउंट्स दिया गया एंड ऑल्सो वी बीन गिवन दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 500 केजेस इन केमिकल ए एंड 320 केजेस इन केमिकल बी, राइट, विच आर नॉर्मल ब्रेकेजेस. एंड ऑल्सो ये बताया गया है कि देयर इज अ फर्दर प्रोविजन फॉर deterioration, which amounts to 2% of the remaining, chemicals का जितना भी quantity बचा है. I mean to say that after normal breakages जितना भी number of quantity बचा है उस पे और 2% further deterioration का chances है is what we have been provided with. So to what the institute needs us to do here is they want us to calculate rate per kg of the chemical. So first of all हमें rate per kg of chemical A and chemical B पर arrive करने के लिए we need to first calculate the effective quantity that we have in hand, which means that हमने खरीदा कितना था एंड उसको हमारे फैक्ट्री तक लाने के पीरियड में कितना लॉस हुआ. आफ्टर दैट लॉस हमारे हाथ में नेट नेट कितना क्वांटिटी बचा है इज व्हाट वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट. सो लेट अस कैलकुलेट द इफेक्टिव क्वांटिटी फर्स्ट. सो यहाँ पर हम केमिकल ए का कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम केमिकल बी का कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव क्वांटिटी, राइट. सो क्वांटिटी परचेज्ड जो था हमारा दैट वाज 10,000 kgs for chemical A and 8,000 kgs for chemical B. This is in kgs. Okay. So now अभी यहाँ पर we know that a shortage of 500 kgs for chemical A, 320 kgs of chemical B बोला गया था, right? So normal breakages दिया गया of 500 kgs for chemical A and 320 kgs for chemical B. So quantity after normal breakages is 9,500 for chemical A and 320 kgs for, sorry, 7,680 kgs for chemical B. Abhi further we need to also consider for deterioration of 2%. So 2% jo hai that we are assuming is to be calculated on quantity after normal breakages, which is 9,500 and 7,680. Why we are considering this 2% on the quantity after normal breakages is that we are assuming that this deterioration is a further deterioration. Not assuming, actually it is given in the question that it is a further deterioration. मतलब normal breakages होने के बाद और 2% का deterioration होने वाला है. So because it is further deterioration, we are not calculating it on the quantity purchase, but we are calculating it on the quantity after normal breakages. So हम 2% calculate जो करेंगे यहाँ पर further deterioration, right, which is 2% of quantity after normal breakages. Same applies here. So net effective quantity जो है हमारा that is 9,500 minus 190 for chemical A and 7,680 kgs minus 154 kgs for chemical B. So अभी हमारे पास effective quantity है. So why did we calculate effective quantity? हमने effective quantity इसलिए calculate किया है ताकि जितना भी हमारा cost हुआ है for chemical A and chemical B, not only the purchase cost
बट ऑल्सो जो भी टैक्सेस लगे होंगे उस पे, एंड जितना भी खर्चा हुआ रहेगा हमारा टू ब्रिंग दोज केमिकल्स फ्रॉम प्लेस वेयर इट वाज परचेज्ड टू प्लेस वेयर वी हैव द गोडाउन और फैक्ट्री व्हाटएवर इट इज। सो सारे जो भी खर्चा है दैट वी विल कैलकुलेट पर केजी, एंड पर केजी कैलकुलेट करने के लिए हम इफेक्टिव क्वांटिटी यूज करेंगे। रीजन बीइंग हमारा जो ब्रेकेजेस है एंड जो डिटीरियोरेशन की वजह से लॉस हुआ है दैट वी आर अलोकेटिंग टू द इफेक्टिव क्वांटिटी। मतलब हम इफेक्टिव क्वांटिटी जो हमारा टोटल आउटपुट है, आई मीन हमारा इनपुट जो था वो 10,000 केजेस था फॉर एग्जाम्पल केमिकल ए के हिसाब से देखते हैं, हमने खर्चा हमारा जो था एक्चुअल में देखा जाए तो 10,000 के हिसाब से था। बट क्या हमारा आउटपुट 10,000 है? नॉट आउटपुट एग्जैक्टली, बट क्या हम फैक्ट्री में लाने के बाद हमारा जो क्वांटिटी है जितना खरीदा था उतना ही हमारे पास है क्या फैक्ट्री में? फैक्ट्री तक आने के बाद नहीं है। सो हम अपना बुक्स में जो क्वांटिटी रिकॉर्ड करेंगे वो होगा, वो इफेक्टिव क्वांटिटी होगा। आई मीन खर्चा जो भी अपन रिकॉर्ड करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द इफेक्टिव क्वांटिटी। I hope you have understood why we are using effective quantity, right? So now we'll move on to calculating the total cost. अभी again हम देखते हैं purchase cost for chemical A is given as 1 lakh, right? And for chemical B it is 1,04,000. Now basic custom duty लग रहा है on each chemical at the rate of 10%. Basic custom duty at the rate of 10%. So that will be right. And same for this. अभी वी हैव रेलवे फ्रीट जो है वो कंबाइंड अमाउंट दिया हुआ है 3,840 फॉर केमिकल ए एंड केमिकल बी। सो हम इसको अलोकेट कैसे करेंगे? वी विल अलोकेट दिस ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी परचेस्ड। सो अपना टोटल अमाउंट है 3,840। सो वी आर बाइफरकेटिंग दिस अमाउंट in the ratio of quantity purchased of both the chemicals, right? So total quantity purchased of both the chemicals कितना आएगा? 18,000, right? And उसमें से chemical A का portion कितना है? 10,000. So what we'll do? Total railway freight multiplied by chemical A का chemical A का weight कितना है? I mean weightage कितना है? Out of total, right? So 2,133 is railway freight for chemical A, and for chemical B it will amount to 1,707. So now our total cost, और कुछ है क्या बचा हुआ है टोटल कॉस्ट में लेने के लिए? नहीं. So we'll sum up this for chemical A, sum up this for chemical B. So now we have total cost, right? अभी rate per kg. So as I said, हमारा total cost will be divided by effective quantity, right? And for chemical B, effective quantity. So guys, if we see rate per kg for chemical A is 12.04 and for chemical B it is 15.43. Again, I'm saying I'll explain you why we are dividing the total cost with effective quantity. हमने खरीदा था 10,000 for chemical A units, cages, 10,000 cages हमने खरीदा था, but in the process of bringing those 10,000 cages from the place where it was purchased till the factory or the plant, हमारे पास इफेक्टिव क्वांटिटी आया 9,310 ड्यू टू द नॉर्मल ब्रेकेजेस एंड कुछ खराब हो गया केमिकल ए विच इज डिटीरियोरेशन, राइट? सो 500 केजेस जो है
लाने के टाइम यहाँ वहां गिर गया थोड़ा बहुत, कोई केमिकल एक, लेट्स से कुछ पैकेट्स यू नो फट गया एंड उसमें से गिर गया, सो दैट वाज नॉर्मल ब्रेकेज और नॉर्मल वेस्टेज यू कैन से। सो 500 केजेस प्रोसेस में लाते वक्त यहाँ वहां गिर के या पैकेट्स वेस्ट हो गए, तो दैट्स हाउ 500 केजेस हमारा लॉस हो गया। एंड आफ्टर दैट जो 2% हमने कैलकुलेट किया, कंसिडर इट एज यू नो खराब हो गया। सो 190 केजेस ऑफ केमिकल ए खराब हो गया। सो आफ्टर ऑल दीज लॉसेस वी आर लेफ्ट विद 9310 केजेस। सो बिकॉज हमारे हाथ में यूजेबल क्वांटिटी 9310 ही है, सो हमारा जितना भी कॉस्ट हुआ दैट वी विल calculate as per the effective quantity, will not consider our wastages. That's how we arrive at rate per kg, and which is 12.04 for chemical A and 15.43 for chemical B. Right, let us just cross verify this answer with the institute's answer. As we can see here, 9310 is your chemical A ka effective quantity and chemical B ka 7526. And you can see here 12.04 and 15.43. Okay, I hope you guys have understood this sum. Let's move on to the second sum. So illustration number 2. Please guys pause this video and just go through the question and then we'll discuss the question. Right? Okay. I hope you guys have gone through the question. यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर्स लेजर if following invoice was received from a supplier, right? Okay, ध्यान से देखना, 32 is not any rate or like that, it is part, जो भी मटेरियल दिया उसका पूरा नाम है ये, पार्ट नंबर 32, so don't get confused. So पार्ट नंबर A32 200 यूनिट्स खरीदा हुआ है at rate of 5, डिस्काउंट है प्लस इनवॉइस है ये, ध्यान से देखना, दिस इज इनवॉइस, सो लेस 20% डिस्काउंट है, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट, एंड उसके बाद उस पे जीएसटी लगाया हुआ है 800 पे 12% का जीएसटी, एंड देन पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस 50, 946 का इनवॉइस में टोटल होगा. So further, a 2% cash discount will be given if payment is made in 30 days. Okay, documents sustaining payment of GST are enclosed for claiming input credit बोला. So guys, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, at what, क्या पूछा गया, सॉरी, at what price per unit would part number A32 be entered in the stores ledger? Basically, part number A32 का हमें कॉस्ट पूछा गया है, तो we'll arrive at the total cost for 200 units of part number A32, right? So let's begin with it. हाँ, हमने बचपन में पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है, राइट? सो वी विल nowhere consider this 200 in the books in recording the cost in stores ledger, right? So we'll start with 800 directly. हमने 200 क्यों नहीं कंसिडर किया? बिकॉज इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए हम नहीं कंसिडर करने वाले हैं. सो we'll start with 800 after trade discount, right? So after trade discount, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट हमारा है 800 का टोटल, राइट? नाउ जीएसटी 96 रुपीज दिया हुआ है, विच अमाउंट्स टू विच इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, राइट? सो हम इस जीएसटी के अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे इन द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल. रीजन हम आते हैं सम के एंड में, I'll give you the logic for why we are not considering the GST, right? Now let us move on to the packaging charges. Packaging charges दिया गया है 5 non-returnable boxes amounting to ₹50. अभी देखो, अगर ये रिटर्नेबल बॉक्सेस जो भी पैकेजिंग के लिए है, सो नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है, राइट? सो जो भी पैकेजिंग बॉक्सेस है, अगर ये रिटर्नेबल होता तो वी वुड हैव नॉट कंसिडर दिस 50 रुपीज इन आवर टोटल कॉस्ट. बिकॉज हम इस पैकिंग बॉक्सेस को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमने 50 रुपया जो है वो उस पैकेजिंग बॉक्सेस को खरीदने के लिए भी हमने पैसा पे किया हुआ. अगर समझो ये रिटर्नेबल होते
तो we would have considered this as a deposit, which means अगर as and when we return the boxes, we'll get back this 50 rupees. But that is not the case over here. ये नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है, मतलब हमको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. वी हैव पेड फुल्ली फॉर दोस पैकिंग बॉक्सेस एंड वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न. सो बिकॉज अगर हमने ये जो भी मटेरियल है खरीद अगर नहीं खरीदे होते तो वी वुड हैव नॉट बॉर्न दिस कॉस्ट फॉर पैकिंग बॉक्सेस. बिकॉज ये मटेरियल खरीदा तो उसके वजह से हमको पैकिंग बॉक्स भी खरीदना पड़ा एंड ऊपर से ये नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है. सो दिस कॉस्ट ऑफ 50 rupees is borne by us because we have purchased the material part number A32. So this cost will also be included in the total cost of part number A32. Because अगर ये खरीदा ही नहीं होता तो हम इस खर्चा पैकिंग बॉक्सेस पे करते ही. पहला पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट ये, अगर किया भी खर्चा तो क्या ये पैकिंग बॉक्सेस रिटर्नेबल है? नहीं. सो दिस cost is only because of part number A32.A, and two, because it is non-returnable, we are including this in the cost, including this amount of rupees 50 in whatever material that we have purchased. So packing charges हम consider करेंगे of 50, right? So यहाँ पर क्या दिया गया है? A 2% cash discount will be given if payment is made in 30 days, right? अभी हम इस 2% कैश डिस्काउंट को भी कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे. रीजन बी, दिस 2% कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली एज एन इनकम, या बेसिकली दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस जो कहते हैं. बेसिकली डिस्काउंट इनकम कहो या इनडायरेक्ट इनकम, नॉट इनडायरेक्ट इनकम, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, बट दिस विल बी recorded as a recorded on the income side. Sorry, recorded on the income side. My bad. I was getting confused a bit. So this will not be part of cost, but will be recorded separately on the income side. So we are not considering, or we are not deducting this from the total cost. And documents substantiating payment of GST are enclosed for claiming input credit bonus. So because input credit लेने वाले हैं, हम इसको कॉस्ट में नहीं लेंगे. मैं आपको बताता हूँ, जिसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, आइडियली इसका एंट्री कैसे होगा? इस अमाउंट्स भूल जाते हैं जनरली जब भी हम कुछ खरीदते हैं, एक एक्सपेंस हमने किया उस पर जीएसटी भी लगा है, हम इसका एंट्री कैसे करें? वॉट एवर इट इज, मटीरियल अकाउंट डेबिट, कोई भी मटीरियल हो उसके ऊपर का जीएसटी अकाउंट को डेबिट करते हैं. एंड देन हम क्या करते हैं, टू जो भी पार्टी होता है, आई मीन क्रेडिटर या पार्टी, उस पार्टी का अकाउंट को करते हैं. या या फिर हम क्या करते हैं, परचेजेस, राइट? सॉरी, मैंने गलती से पार्टी अकाउंट बोल दिया. ओह सॉरी यार, इट पार्टी अकाउंट, गेटिंग कंफ्यूज्ड अ बिट, रियली सॉरी फॉर दैट. सो मटेरियल अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट. अभी हमने ये जीएसटी अकाउंट, इनपुट जीएसटी अकाउंट कर दिया इसका, इनपुट जीएसटी अकाउंट. अभी इस इनपुट जीएसटी का अमाउंट हमारे पास है कि 96 रुपीज. जिस हिसाब से हमारा ये परचेजेस का एंट्री है, उसी हिसाब से हमारा एग्जैक्टली अपोजिट वे में सेल्स का भी एंट्री हुआ होगा. जब सेल्स का एंट्री हुआ होगा तभी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा हमारा, एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, दूसरा आउटपुट जीएसटी अकाउंट आएगा, आउटपुट जीएसटी अकाउंट. सो लेट्स से वो 100 रुपीज, राइट? सो हम जब जीएसटी मंथ एंड पे पेमेंट करेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक अ सेट ऑफ दिस अमाउंट इन फ्रंट ऑफ दिस अमाउंट. तो नेट नेट हम 4 रुपया पे कर रहे हैं. सो because we are going to take input tax credit, so we are not actually bearing this 96 rupees, right? Because ये हमारा output GST के सामने knock off होने वाला. So that is the reason we are not going to consider the GST amount in total cost of the part A. Sorry, क्या है इसका नाम? Part number A32. So हमारा total cost बनता है finally सिर्फ इन दोनों का, which is 850.
right guys? So now let us just okay, 850 is our total cost. One thing I forgot to calculate is ये लोग ने हमें पूछा था कि प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना भूल गए. सो 850 डिवाइडेड बाय 200 which is 4.5 cost per unit, right? I hope you guys have understood this sum. Now let's move to illustration number 3. Right. Before we start with illustration number 3, I would like to explain you a concept of economic order quantity. Before economic order quantity, there are 3 to 4 terms which I want to explain you guys. So सबसे पहले आता है कि reorder level, right? And दूसरा है कि reorder quantity. Okay. अभी reorder level का मतलब क्या है? लेट्स से तुम्हारा एक फैक्ट्री है एंड आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें. सो मैन्युफैक्चर करने के लिए यू नीड रॉ मटेरियल, राइट? सो यू यूज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन. अभी ऐसा तो नहीं है कि हर एक प्रोडक्शन बैच के लिए तुम बार बार जाके रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे. नहीं, यू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक टू सपोर्ट योर प्रोडक्शन, राइट? तो अभी व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? सो रीऑर्डर लेवल का मतलब यह है कि आपके गोडाउन में कितना स्टॉक बचा हुआ होगा, तब जाके आप एक्स्ट्रा स्टॉक को मंगाओगे, ताकि आपका एज ऑफ टुडे जितना भी स्टॉक बचा हुआ है वो स्टॉक खत्म होने से पहले ही आपका नया स्टॉक आ जाता है, सो दैट यू डोंट हैव टू पॉज योर प्रोडक्शन. समझा आपको? अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. रीऑर्डर लेवल का मतलब है आज तुम्हारा जो स्टॉक है गोडाउन, वो कौन से लेवल पर कौन से लेवल पर आने के बाद आप रीस्टॉक करने का सोचोगे, सो दैट आज तुम्हारा स्टॉक जितना भी है वो तुम्हारा प्रोडक्शन को सपोर्ट करके उस स्टॉक जीरो होने से पहले आप फिर से रीस्टॉक कर पाओ, ताकि आपका प्रोडक्शन जो है वो रुके ना. राइट? लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. लेट्स से तुम्हारा स्टॉक पड़ा हुआ है 10 यूनिट. 10 यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, राइट? और आपका डेली प्रोडक्शन में 2 यूनिट्स लगते हैं, राइट? 2 यूनिट्स लगते हैं. सो अब ये स्टॉक एंड लेट ये स्टॉक आपको कितना दिन सपोर्ट करेगा प्रोडक्शन के लिए? 10 यूनिट्स आपका इन्वेंट्री में है, आपका डेली प्रोडक्शन में 2 यूनिट्स लगते हैं, तो आपका प्रोडक्शन कितने दिन चल सकता है इस स्टॉक से? ओके सॉरी, ये 10 डिवाइड बाय आपका प्रोडक्शन 5 डेज चलेगा, बिकॉज यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ स्टॉक. अभी 6th डे के लिए तुम्हारे पास स्टॉक नहीं. सो 6th डे अगर स्टॉक चाहिए तो तुमको फिर से रीऑर्डर तो करना पड़ेगा स्टॉक को. 5 दिन के लिए ये प्रोडक्शन सपोर्ट करने वाला है तुम्हारा जो ऑलरेडी स्टॉक है वो. 5 दिन के बाद क्या खाली बैठोगे एक दिन? अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है 6th डे पे, तो और यूनिट्स चाहिए ना. सो 6th डे पे जो स्टॉक रीस्टॉक करोगे वो कब करोगे? कौन सा लेवल आने पे करोगे? लेट्स से अगर आज हमने रीस्टॉक करने के लिए ऑर्डर दिया, तो 2 दिन लगते हैं स्टॉक को आने में. 2 days टाइम फॉर स्टॉक टू
be delivered at our godown, राइट। सो आज अगर हमने ऑर्डर किया तो 2 दिन लगेंगे स्टॉक को आने के लिए। सो हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा, सो दैट ऑन द 6th डे वी डोंट रन आउट ऑफ स्टॉक, राइट। सो इट विल बी 5 डेज हमारा स्टॉक 10 यूनिट्स का सपोर्ट करने वाला है फॉर 5 डेज। सो हमको रीऑर्डर करने के बाद स्टॉक आने के लिए 2 दिन टाइम लगेंगे। सो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, 3rd डे को रीऑर्डर करना चाहिए ताकि 6th डे को स्टॉक आए एंड 6th डे को हम उसको प्रोडक्शन में यूज कर पाए। समझा आप लोगों को? सो वी हैड 10 यूनिट्स का स्टॉक विद अस, ईच डे 2 यूनिट्स यूज होता है, ठीक है, प्रोडक्शन में। सो दिस 10 यूनिट्स विल सपोर्ट आवर प्रोडक्शन फॉर 5 डेज। आफ्टर 5 डेज हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, विच इज ऑन दिस फ्रॉम 6th डे ऑनवर्ड्स हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू होने के लिए वी शुड हैव स्टॉक। सो उस जो नया बैच ऑफ स्टॉक हमें चाहिए उसे हम कब ऑर्डर करना चाहिए, कौन से लेवल पे आने के बाद करना चाहिए, विच इज बेसिकली हमारा वो कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू नो अपना रीऑर्डर टाइम क्या है। आज अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो कब तक अपना स्टॉक आएगा। तो आज हम ऑर्डर कर रहे हैं तो 2 दिन लगेंगे। सो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, 2 यूनिट्स इंटू 3 डेज, राइट। वाई 3 डेज? बिकॉज 5 दिनों में से 3 दिन प्रोडक्शन होने के बाद अगर तीसरा दिन हमने ऑर्डर किया तो 2 दिन का टाइम लगेगा पर स्टॉक टू अराइव एट गोडाउन, ताकि हम 6th डे प्रोड्यूस कर पाए, राइट। तो जब हमारा स्टॉक जो है 6 यूनिट्स पर आने के बाद वी नीड टू रीऑर्डर आवर स्टॉक। सो दिस इज द रीऑर्डर लेवल, राइट। अभी रीऑर्डर क्वांटिटी, व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है, अब हमने तो देख लिया कि रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल के बाद आता है रीऑर्डर क्वांटिटी। उसका मतलब है हम ठीक है डिसाइड तो कर लिया कि भाई रीऑर्डर करना है स्टॉक, बट कितना क्वांटिटी रीऑर्डर करें। सो हम 100 यूनिट रीऑर्डर करेंगे कि 200 करेंगे, 300 करेंगे, हाउ 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 विल बी डिसाइड हमें कितना क्वांटिटी रीऑर्डर करें। उसके लिए सबसे पहला हमको ये समझना पड़ेगा टोटल कॉस्ट कर। तो सबसे पहले इन्वेंट्री की जब बात आती है तो इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट जो लगता है उसको कहते हैं कैरी कॉस्ट। कैरी कॉस्ट विच मीन्स बेसिकली आपका गोडाउन में रेंट लग रहा हो, अ, या दूसरा कुछ चार्जेस पे कर रहे हो इन्वेंट्री को प्रिजर्व करने के लिए, वो सारे जो भी कॉस्ट है दोज आर कॉल्ड योर कैरिंग कॉस्ट्स ऑफ इन्वेंट्री, राइट। दूसरा आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अरे सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। सो व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? एक एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का। लेट्स से आप लोगों को खाना है पनीर चिली और आप लोगों को बिरयानी भी खाना। आइडियली आप क्या करोगे, इन दोनों चीज को जोमेटो पर एक ही साथ ऑर्डर करोगे ताकि डिलीवरी चार्ज जो है वो एक ही बार में कम अमाउंट लगे। हम क्या, आइडियली आप सब लोग जोमेटो से ऑर्डर करते रहोगे। अगर 2 आइटम मंगाना है और 2 बार अलग अलग से मंगाओगे तो डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा, सेम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? लेट्स से ईच पर पर डिलीवरी 10 रुपीज का चार्जेस है जोमेटो का डिलीवरी चार्ज, ठीक है, डिलीवरी चार्ज। तो एक बार ऑर्डर करोगे तो 10 रुपया लगेगा, 2 बार अलग अलग से ऑर्डर करोगे तो तुम्हारा कितना होगा, 20 रुपया होगा। सो व्हाट वुड यू चूज?
would you choose to order both the items at once and pay only 10 as delivery charge, or would you choose to order two items separately and end up paying 20 rupees as your delivery charge? You would of course choose to order at once and pay 10 rupees as your delivery charge, right? So इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए सोचो कि जितनी बार आप ऑर्डर करोगे उतनी बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. सो आइडियली more the number of orders, more is your ordering cost. ओके. अब ये हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात. अब कैरिंग कॉस्ट की बात है. हमें स्टॉक उतना ही रखना चाहिए जितना हमें जरूरी है. अगर समझो हम ज्यादा स्टॉक रखते हैं तो क्या होगा कि ज्यादा कैरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जगह उतना लगेगी, या लेट्स से प्रिजर्विंग कॉस्ट भी बढ़ेगा जितना यूनिट्स बढ़ेंगे अगर प्रिजर्वेबल वाले आइटम्स हो तो. सो कैरिंग कॉस्ट इज बेसिकली टू द कॉस्ट दैट यू बेयर टू मेंटेन द इन्वेंटरी, राइट? सो जितना तुम्हारा इन्वेंटरी कम होगा उतना तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट कम रहेगा. बट हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर योर कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट. मतलब द पॉइंट where your carrying cost is equal to ordering cost, or you could say you need to order that level of quantity which at which your carrying cost and ordering cost are minimum. अभी एक चीज जो मैंने बोला वो याद रखना कि ऑर्डर्स जितने जितने बढ़ते जाते हैं उतना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होता है. जितना कम ऑर्डर्स उतना कम ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट? और इसको ध्यान में रखते हुए we'll look at this ग्राफ. अभी यहाँ पर देखो, ये आपका टोटल कॉस्ट का कर्व है, राइट? एंड ये एनुअल रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट्स का, ठीक है, ये. एंड हियर दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट्स. यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को एंड योर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स योर टोटल कॉस्ट्स, राइट? सो यहाँ अगर ग्राफ ठीक से देखोगे तो एट द लोवेस्ट पॉइंट जहां पर क्वांटिटी कम है वहां पर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, सॉरी कैरिंग कॉस्ट जो है वो लोएस्ट है, राइट? कम क्वांटिटी तो कम कैरिंग कॉस्ट. एज एंड व्हेन योर क्वांटिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग your carrying cost gets higher. Now if you see at the ordering costs, जैसे जैसे तुम्हारे जितने कम क्वांटिटी के ऑर्डर्स होंगे उतना ज्यादा ऑर्डर्स होंगे. अगर ऑर्डर क्वांटिटी कम है तो तुम्हारे ऑर्डर्स ज्यादा होंगे. एक एक ऑर्डर में लेट से तुम 10 यूनिट्स का ही क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो तो तुम्हारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे. लेट से आपका टोटल क्वांटिटी जो थ्रू आउट द ईयर आपको चाहिए वो है 100, और आप 10-10 का ऑर्डर, 10-10 यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे हो. सो हाउ मेनी ऑर्डर्स विल यू बी प्लेसिंग टोटली इन अ ईयर? 10 ऑर्डर्स. लेट्स से अगर आप क्वांटिटी पर ऑर्डर अगर बढ़ा देते हो, लेट अस टेक इट एज 40 पर ऑर्डर. पर पर ऑर्डर आप 40 क्वांटिटी मंगा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 2.5. सो बिकॉज ये नंबर ऐसे ऑर्डर है, लेट मी टेक इट एज 20. अगर 20 करते हो तो तुम्हारा 5 ऑर्डर हो जाता है. अगर तुम 10 क्वांटिटी पर ऑर्डर मंगाते हो तो योर ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 10. बट अगर वही तुम एक ऑर्डर में 20 क्वांटिटी मंगाते हो आपका ऑर्डर्स आता है 5. सो lesser the quantity, more number of orders you'll be placing, and that is why if you see your total ordering cost at lower quantity order size is higher. But when you increase the quantity per order तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो गिरने लगता है. सो अगर ये दोनों कॉस्ट को मिक्सअप करके प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर टोटल कॉस्ट का ऐसे आता है. दिस टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स नॉट जस्ट कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल बॉन्ड. सो अगर वो तीनों कॉस्ट को मिला के हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जो line comes like this. Okay, so now if you see this intersection point of ordering costs and carrying costs,
So this is the point where the economic order quantity will come. What economic order quantity is? I'll explain you that. हम जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. So this point represents economic order quantity, which means that at this point your carrying cost and ordering costs are minimum, and they are almost, I mean, at this point your ordering costs and carrying costs are minimum. बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, उस कॉम्बिनेशन में आपका या तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, या तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा एंड कैरिंग कॉस्ट कम होगा. दिस इज द point. If you have to save on your costs, this is the order quantity that you need to place for each order, right? ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है. कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं विल बी डिसाइडेड बाय एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी होगा, एंड एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी होगा वो डिसाइड करने के लिए ही हमने अभी ये ग्राफ को समझा. सो राइट, I hope you guys have understood what economic order quantity is. Right? पहला हमने क्या देखा? Reorder level देखा, उसका मीनिंग क्या, and then we came to reorder quantity, which is known as economic order quantity. Right? So सबसे पहले reorder quantity के लिए हमें दो कंसेप्ट समझना पड़ा था. That is carrying cost and ordering cost. हमने देखा what carrying cost is, what ordering cost is, and basis that we understood that we need to arrive at a point where ordering cost and carrying cost are minimum so that we save up on our costs. And how do we calculate that? वो हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने समझा कि हाउ द लॉजिक वर्क्स, राइट? सो नाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें समझ गया, राइट? So now we'll start with the illustration number 3. Before starting illustration number 3, I would like to also explain you guys how economic order quantity is calculated. So economic order quantity ka basically formula is EOQ is equal to, I think I'll just show you the formula from here. EOQ is equal to square root of 2 into A into O divided by C. यहाँ पर A का मतलब है एनुअल डिमांड, O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, एंड C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट per unit per annum. Okay, so I'll also explain you guys how this formula is derived for EOQ. सबसे पहला मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ what is EOQ. EOQ is that point of quantity where your carrying costs and ordering costs are minimum, right? And EOQ is quantity per order, economic order quantity per order, which decides your number of orders, right? And now just a second. Yeah, guys, so मैंने जो ये फॉर्मूला बताया यहाँ पर economic order quantity का, now we'll understand how this formula is derived. So as I said, economic order quantity जो है वो उस पॉइंट पर होता है जहां पर your ordering cost is equal to carrying cost, right? ये सबसे पहला. Now we will try and
break these ordering cost and carrying cost further. How do we arrive at the ordering cost? Number of orders जो होते हैं, right, multiplied by cost per order, right, gives us ordering cost, right? Now this is equal to carrying cost. Carrying cost कैसे लिख सकते हैं? Number of units to carry, right, which is number of units to be kept in inventory, number of units of inventory बोलो, number of units to be stocked बोलो, number of units to carry, basically this multiplied by carrying cost per unit, right? ये हमने लिखा है ऐसे अभी. नाउ फर्दर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि एनुअल डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए, एनुअल डिमांड के हिसाब से उसका टोटल क्वांटिटी पर ईयर कितना है, दैट डिवाइडेड बाय number of orders, sorry, that divided by order quantity, right? Order quantity, which will give us the number of orders, right? Now again, this will be multiplied by cost per order, right guys? Abhi, this will be equal to number of units to carry को हम कैसे break down करेंगे? We assume that कि हर time number of units to carry is half of the order quantity is what we assume. उसका मतलब है कि half हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, इट इज इन द प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड बाकी हाफ जो है, दैट इज वी आर लुकिंग आफ्टर दैट स्टॉक, वी आर प्रिजर्विंग देम, वी आर स्टॉकिंग देम, सो दैट जो प्रोडक्शन चल रहा है वो प्रोडक्शन खत्म होने के बाद देन अगेन वी स्टार्ट यूजिंग दीज, अंटिल दैट टाइम वी आर प्रिजर्विंग दिस स्टॉक बोलो, या कैरी कर रहे हैं, मतलब जो भी इन्वेंट्री में गोडाउन स्पेस, इन्वेंट्री गोडाउन, जो भी इन्वेंट्री हमारा बचा हुआ है, सो विच इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन, उसको हम जो गोडाउन में स्पेस यूज कर रहे हैं, जिसके लिए कॉस्ट लग रहा है, रेंट लग रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जितना खा रहा है वो, everything that every such cost which we are bearing to carry this inventory which is not yet used in the production, वो हम अज्यूम करते हैं कि जितना भी हमने ऑर्डर क्वांटिटी लाया था उसमें से हाफ इज इन द प्रोडक्शन, हाफ इज वी आर कैरिंग देम एज इन्वेंटरी, सो we calculate it as of the half multiplied by your order quantity, right? Order quantity, right? And now again multiplied by carry cost per unit. समझा ना आप लोगों की ऑर्डर क्वांटिटी का इनटू हाफ क्यों लिया? वी अज्यूम दैट वॉट एवर ऑर्डर दैट वी हैड प्लेस्ड, उस टोटल क्वांटिटी में से वी अज्यूम दैट हाफ द क्वांटिटी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन टिल नाउ, एंड ऑलवेज हम आधा क्वांटिटी को मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट येट यूज्ड इन द प्रोडक्शन. बाकी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वांटिटी, फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑर्डर था, वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है अभी फिलहाल, प्रोडक्शन चल रही है उसकी, एंड बाकी आधा अभी भी यूज हुआ नहीं है. वंस दैट प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, देन दिस बैच जो आधा बच गया, दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन. सो वी आर अज्यूमिंग हाफ हाफ करके, ठीक है? दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग हाफ ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ अभी इसको लेट अस जस्ट नेम एनुअल डिमांड एज ए and divided by order quantity as EOQ, just OQ. Okay. Order quantity, right? Order quantity, right? Now, again, multiplied by carrying cost per unit. Right? Now, again, multiplied by order quantity
multiplied by your cost per order. Let's just name it as O. Now this is equal to half of order quantity, right? Which is OQ divided by 2. OQ divided by 2 is multiplied by your carrying cost per unit, which is called as C. अभी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे A upon OQ है, right? Let's just do it as 2 into A into O, right? And this divided by C is now equal to OQ into OQ, which is basically OQ square, right? मैं अभी यहाँ पर टाइप नहीं कर पा रहा हूँ. I would like to request you guys to understand that this is OQ square basically, right? मैंने इसको OQ into OQ लिखा है because of the Excel limitation that I have here, जो मैं ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट. सो OQ into OQ. सो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखोगे तो OQ स्क्वायर में से अगर स्क्वायर को मैं, लेट मी जस्ट प्रेजेंट इट दिस वे अगेन, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ. कुछ नहीं है, मैंने एलएचएस को आरएचएस में डाला, आरएचएस को एलएचएस में डाला, राइट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अभी यहाँ पर OQ स्क्वायर में से स्क्वायर को अगर मैं ये साइड भेज दूंगा राइट साइड में तो स्क्वायर रूट बन जाएगा. नाउ इफ यू सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव हियर एज द फॉर्मूला. EOQ is equal to square root of 2 into A into O divided by C, which is annual demand multiplied by order quantity divided by carrying cost per order. Okay, this is order cost, cost per unit. Sorry, ordering cost per order, and this is carrying cost per unit. ये ध्यान में रखना, right? ठीक है, order quantity which is basically economic order quantity. ये साइड अगर स्क्वायर को भेज देंगे तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 into annual demand multiplied by ordering cost per order divided by carrying cost per unit. Right, now let us just proceed with this illustration number 3. यहाँ पर illustration number 3 है, क्या दिया गया, calculate economic order quantity from the following information, also state number of orders to be placed in India. Consumption of the materials per annum 10,000 kgs दिया, order placing cost per order 50 दिया, cost per kg of raw materials is rupees 2 and storage costs is 8% on average inventory दिया हुआ है, right? Cost per kg of raw materials is rupees 2. Now consumption of materials per annum, order placing cost per order 50, cost per kg of raw materials 2, storage costs 8% on the average inventory. Okay, guys. Let us just calculate, guys, calculate the economic order quantity. Also state number of orders to be placed बोला है. So सबसे पहले we will start with storage cost. हम calculate करते हैं पहले per unit कितना. So हमें, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 2. अभी स्टोरेज कॉस्ट जो है विल बी कैलकुलेटेड, वी नीड टू कैलकुलेट इट एज पर एक यूनिट. तो यहाँ पर दिया गया 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री को बाजू में रखते हैं सबसे पहले. 8% किस पे कैलकुलेट करेंगे, 8% एक एक यूनिट का चेंज. वी हैव 1 यूनिट का प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विच इज रुपीज 2. सो हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट है which is basically carrying cost, which is C. Carrying cost जो है, that is equal to, right, 8% of
what 8% of rupees 2 per unit, which amounts to 0.16. अभी हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया गया है गाइस 50 rupees. Okay, and we have annual demand भी है हमारे पास, which is consumption, sorry, total consumption जो है वो है 10,000 kgs. So which is basically annual demand. नाम के लिए हम annual demand, but it's basically total consumption. So requirement देते हैं, required, which is 10,000 kgs, right? ये kgs है, ये rupees है, ये भी rupees है. Now हम EOQ calculate करेंगे. EOQ which is equals to basically 2 equal to 2 multiplied by हमारा ये 10,000 and multiplied by then ordering cost per order, right? इसको ब्रैकेट्स में डालेंगे. 2 into हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड देन डिवाइड करेंगे हम कैरिंग कॉस्ट से, राइट? अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस अमाउंट which is 2,500. So EOQ हमारा जो है 2,500 है. 2,500 EOQ है. What is EOQ? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इसका मतलब है एक ऑर्डर में 2,500 यूनिट्स का क्वांटिटी होगा. सो वी फाउंड EOQ. नाउ हम टोटल ऑर्डर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करेंगे विथ EOQ, राइट? जितना हमारा टोटल रिक्वायरमेंट है which is 10,000 divided by हमारा EOQ कितना है 2,500. So 4 orders, right? Let's just cross verify this amount, sorry, this calculation. So if you see here guys, हाँ हमारा EOQ आया 2,500 kg and number of orders to be placed in a year. Total consumption of the materials per annum divided by EOQ, which is 4 orders per year, right? Now, same way, we will also go ahead and learn the remaining illustrations in the next lecture. Until then, I'd request you guys to ask any doubts if you have in the comment section. I'll definitely try and help. Thank you guys. See you in the next lecture.